For centuries, Lahore has its own position in South Asia, whether it comes to spiritual journeys or the temporal rule of the Mughals, Sikhs, and the British. When the Mughals came to northern India, Akbar made a 30 feet high fortified wall around the city with 12 gates, which cover an area of 256 square kilometers. Water has always been the main factor in creating civilizations, as is obvious from history. But the Mughals understood the importance of water, so they made the walled city on the banks of the river Ravi. मस्ती गेट है, कश्मीरी गेट है, शेरावाला गेट है और रोशनाई गेट है. इन गेट्स के साथ साथ रिवर रावी चलता था. Lahore became one of the main cities of the Mughal Empire, with all required facilities, mainly water. रावी से पानी को लाया जाता था और मशकों में माशकी जो था एक बहुत अहम स्किल्ड पर्सन था जो मुग़ल पीरियड में अंदरून शहर में शाही ख़ानदान से लेके एक नॉर्मल कन्वेंशनल फैमिली जो थी वो पानी यूज़ कर रही थी और माशकी को पे कर रहे थे और माशकी उसको होम डिलीवर कर देता था कि हमाम में पानी स्टोर होता था और पूरी फैमिली फिर हमाम में से पानी को यूज़ करती थी. फिर थोड़ा सा कमर्शियल एस्पेक्ट आ गया कि लोगों ने कहा कि वार्म वाटर बाथ लें. शाही हमाम में रॉयल गेस्ट आया करते थे, उनको रॉयल फैसिलिटीज़ मिला करती थी और इसमें जो पानी की सप्लाई थी वो दरिया रावी से आती थी. लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे कि पानी की सप्लाई का सिस्टम भी एक मॉडल था, तो इसी तरह ड्रेनेज का सिस्टम भी एक मॉडल था. In 1849, the British annexed Punjab. After several attacks by the British, the city was destroyed. During the rebuilding of the walled city, the British made an outlet in the wall, which was locally called Mori, and finally converted to the 13 gates of Lahore. जहाँ भी कॉलोनियल हुकूमतें गई हैं और उन्होंने जाके अपना आप को इस्टेब्लिश किया है, वहाँ पे सबसे पहले धोबी घाट बनी है. दिस वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ कंटोनमेंट. और जो पहली उनकी कंटोनमेंट थी वो लाहौर के अनारकली, जिसको अनारकली पुराना अनारकली कहते हैं, वहाँ पे धोबी महला पहला जगह थी जहाँ पे पानी को इकट्ठा करना शुरू किया. Mela Ram was a famous philanthropist of those times. His two sons got sick due to contamination of drinking water. The reason was that gurki and drinking water of the wells was getting mixed. गरकी उस मेथड को कहते हैं कि जो सैनिटेशन का पानी था वो वापस एक कुएं में चला जाता था. सो दिस वाज अ कॉन्सेप्ट 600 years ago in Lahore, which was the period of the slave dynasty, the गौरी डायनेस्टी. जब अंग्रेज़ आए तो ये चौकमती का एरिया है, उन्होंने एक गरकी को बंद कर दिया. मेला राम अब HSN को कहता है कि जी आप किसी तरीके से सोचें इसके बारे में कि हम साफ़ पानी, साफ़ ड्रिंकिंग वाटर अंदरून शहर के लोगों को प्रोवाइड करें. सो ये चीज़ें जब पता चली अंग्रेज़ों को तो उन्होंने भी सोचा लेट अस ब्रिंग द टेक्नोलॉजी. तो वो स्टीम टरबाइन इंजन जो है उसको मंगवाया जाता है कि रावी के किनारे पे वो रखा जाएगा, वहाँ से पानी को पंप करेंगे. और क्योंकि हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे थे अंग्रेज़, तो उन्होंने देखा टोपोग्राफी ऑफ लाहौर अंदरून शहर, और अंदरून शहर की जो सबसे ऊंची सतह की जगह थी वो उन्होंने सेलेक्ट की और वो आजकल का जो पानी वाला तालाब है ये वो जगह है. सो द पॉपुलेशन इन 1878 was around 35,000 people in this urban part of Lahore, and this tank was supposed to supply water to those 35,000 people. ये 1 मिलियन गैलन कैपेसिटी का रिजर्वायर है. 12 दरवाज़ों का अलग अलग से कंट्रोल वाल है हमारे पास, जहाँ पे हमें सप्लाई की ज़रूरत ज़्यादा होती है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. दिन में तीन टाइम हम सप्लाई देते हैं पूरे वॉल सिटी को. टेक्निकली ये 2.5 लाख का 4 टैंक हैं और प्रॉपरली ये फंक्शनल हैं. That steam engine used to supply water to this tank. Now
that system does not exist, but we are supplying water to this tank through tube wells now. So there are 7 tube wells. Now Pani Wala Talab is managed by Water and Sanitation Agency Lahore, which is not only responsible for water supply, but also sanitation to the walled city. अब तकरीबन 2 लाख के करीब हम पब्लिक को इससे सर्व कर रहे हैं पानी को, और हम इसके लिए बाकायदा इसकी मेंटेनेंस करते हैं. With the passage of time, Lahore's population increased, and with it so did the demand. The challenge became not only the water supply, but also the drainage and sanitation. Now Lahore has become the second largest city of Pakistan, with a population of 11.3 million. To improve the lives of the citizens of Lahore, the Water and Sanitation Agency was established in 1976. लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जिसकी आबादी 1.25 करोड़ पर मुहित है. उसमें से वासा जो है 80 लाख आबादी को जो है सर्विस मुहैया कर रहा है. वासा का तमाम तर दारोमदार पानी सप्लाई का जो है वो ग्राउंड वाटर के ऊपर है, ज़मीनी पानी पर निसार है, जो हम थ्रू 600 ट्यूबवेल के थ्रू हम जो है वो वाटर सप्लाई मुहैया करते हैं, जिसमें 70 गैलन पर कैपिटा जो है पाकिस्तान में हाईएस्ट रेशो है पानी मुहैया करने का. ये पानी मुहैया करने के अलावा मेन हमारे ऑपरेशन मेंटेनेंस के 3 मेजर जो है फंक्शन है. एक तो पानी पहुँचाना है, दूसरा जो पानी यूज्ड वाटर है उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तीसरा जो है मानसून के दरमियान जो पानी इकट्ठा हो जाता है लो लाइंग एरियाज में उसको डिस्पोज ऑफ करना है. WASA's vision is to be leader in sustainable water supply and sewerage services in the city. हुकूमत की जो इस वक्त की तरजीहात हैं उसमें पानी नंबर 1 पे आता है, क्योंकि पानी का जो स्टॉक करना जिसके लिए डैम्स बनाने ज़रूरी हैं. नंबर 2 जो पानी है उसको कंज़र्व करना, कि पानी को कैसे हम बचत कर सकते हैं, और फिर पानी जो है वो टैप वाटर जो है वो लोगों तक जो है पीने का पानी जो पहुंचाना है, ये पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी प्रायोरिटीज़ में शामिल है. The main sources of water in Lahore are the numerous tube wells, which are providing water not only to the walled city, but all over the city. The total water supply system spans over 6,000 kilometers. WASA has constructed 449 filtration plants in Lahore to provide clean drinking water to the people of Lahore. All these plants are monitored and operated on SCADA system, which is situated at head office in control room. Keeping in view the performance of filtration plants of WASA, Government of Punjab handed over the 124 filtration plants which were previously monitored by local government. So WASA is running 573 filtration plants in Lahore. The water level of Lahore is declining very fast. It's about 1 meter per year. Therefore, WASA has prepared a plan to go for surface water treatment, and by induction of surface water, the groundwater depletion will be controlled. And in first phase, we are going to induct 100 cubic of water that will be served to the 4 areas of the Lahore. The second thing, we are planning also to introduce the zoning. So our distribution network will be zoned, and that will help us to reduce the non-revenue water. And distribution network improvement for water supply is also our priority, and therefore the project, which is including surface water treatment plant to be installed at BRB canal, and after this project the citizens will get assured quality of water 24/7. वासा लेबॉर्ट्री डेली बेसिस पे वाटर सैंपल कलेक्ट करती है. डेली बेसिस पे WHO फ्रिक्वेंसी के मुताबिक, जो कि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से 35 सैंपल्स पर डे बनते हैं, तो हमारा टारगेट भी ये होता है कि पर डे हम 30 to 35 सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट करें. WASA is working to get certification for its water testing lab. ISO 17025 certification will enable WASA to have the lab, which will be the only lab in the water sector of the country to have this certification. To cater to sewage in service area of WASA, 4 major drainage stations,
14 disposal stations, and 104 lift stations are working 24/7 in various parts of the city. जो यूज्ड वाटर होता है उसको हम डिस्पोज ऑफ करने के लिए दरियाए रावी में डिस्पोज ऑफ करते हैं। इसके लिए हमने मेजर हमारे जो है डिस्पोजल स्टेशन जो है रावी के किनारे पे मौजूद हैं। 13 मेजर डिस्पोजल हैं और 105 के करीब जो है वो स्मॉल छोटे से डिस्पोजल हैं जो मुख्तलिफ गलियों में हैं। वो हमारे ड्रेनों के अंदर पानी पंप करते हैं। वो ड्रेन्स जो है विद ग्रेविटी पानी जो है वो दरिया में ले जाती हैं। ये मेन आउटफॉल पंपिंग स्टेशन नंबर 1 जो है ये पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद आने से पहले अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था और इसकी पंपिंग कैपेसिटी जो है वो 165 क्यूसिक है। इसके साथ जो सीवर्स मुंसलिक हैं वो वाल्ड सिटी से और मैकलोड रोड से और बलालगंज एरिया से आते हैं। WASA is running a sewage system exceeding 4,000 kilometers. WASA Lahore is planning to lay the trunk sewer with the help of tunnel boring machine. This will be the very first time in Pakistan of laying of a trunk sewer with the help of a trenchless technology. This idea will help to lay the trunk sewer, but at the same time the city life will not be disrupted. And this project will help us to separate the sewage from the stormwater channel. In the rainy season, WASA establishes emergency rain camps at 35 sore points to avoid ponding of stormwater to ease the life of people. We generate different type of reports. Number one is the ponding report, actually where the water accumulates, it cause ponding. So we have different ponding points which are called by us the sore points. Definitely we monitor them very closely other than the whole city, and we are concerned with the ponding clearest time, the accumulation of ponding and then the redressal time. And the rain record, definitely rain report that we have 16 gauges in Lahore, all over the Lahore city, where we measure the rain intensity. And the third one is the disposal reports. Actually, WASA is the main assets of WASA, which are more concerned with within the rain is the disposal stations, because disposal stations are the, we can say, the main gates who are helping us to drain the water out of the city. WASA has established emergency monsoon camps in 36 main points, different points of Lahore. The basic purpose of these emergency monsoon camps is to monitor the activities of the staff and deployment of machinery at different sore points to drain out the rainwater in minimum time period. Along with this, WASA has a constant liaison with other allied companies like LESCO, MCL and LWMC. In LESCO, we have a constant liaison to get continuous supply of electricity at our disposal stations, to maintain the minimum level in wet wells and to drain out this rainwater as early as possible. In collaboration with Safe City, we get a one desk in Safe City office, and from this Safe City we have monitored all the Lahore during monsoon and any activity done in Lahore. WASA Lahore is also planning to introduce low impact drainage scheme. So in this annual development program, we are going to construct first low impact drainage scheme that will be at Lawrence Road. So we will what we will do, we will reduce the impact of the rainwater by collecting that rainwater into a nearby tank, and after the rain, either we will dispose of that rainwater into nearby stormwater channel, or we can use it for the horticulture purpose. We are executing stormwater drainage project for the central zone of Lahore. It starts from the Haji camp and comes to the Nicholson Road and McLeod Road. Then it comes to the Mall Road area and Supreme Court Registry. After that, from AG office to Jain Mandir, and then it comes to the Chuburji. And in second part, it comes from Chuburji to
through Shamnagar Road up to River Ravi. It will help to improve this drainage issues of Lahore, and also it will improve the environment of the whole area of central zone of Lahore. To serve the people of Lahore, WASA's aims are really high. To achieve these aims, the Planning and Design Directorate does long-term master planning. The wastewater treatment is very important to save aquatic life and to restore recreational activities in River Ravi. Therefore, WASA has planned to install 6 wastewater treatment plants. The first 2 are at Mahmood Butti and Shadbagh, the next one at Shadra. These are to be financed by Asian Infrastructure Investment Bank, and NESPARC is doing studies to prepare final design of these plants. Plant number 4 is to be financed by AFD, which is the Agency for International Development, France. For that also land has been acquired, and preparation for the design is underway through NESPARC. And then through DENIDA, WASA has planned to install a wastewater treatment plant at Qatarband, Lahore, for which the concept clearance paper is under process. And by completion of all these wastewater treatment projects, the aquatic life of the river will be restored, as well as recreational activities, and groundwater will be saved. Water and Sanitation Agency's team leaves no stone unturned to fulfill its responsibility. The management ensures the provision of these facilities efficiently. Training sessions are being organized for staff as well as for the officer for capacity building, especially in the IT department, to adopt modern techniques for smart and efficient working. Capacity building of WASA employees is the priority of our organization. Some engineers are also sent abroad for their masters, and short-term trainings are also being imparted, and WASA Training Center is revitalized to impart training to all categories of staff. After a need-based assessment, different types of trainings designed and offered to WASA employees. This helps to enhance their technical capacity and polish their professional skills. तो जहाँ इतना सेंसिटिव काम होता है वहाँ शहरियों को शिकायत भी होती हैं, और उन शिकायत को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और आसान करना। वासा ने एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर दिया हुआ 1334, जिसके तहत शहरी अपने मोबाइल फ़ोन से या PTCL के नंबरों से इस नंबर पे कॉल करें तो हमारा 24 घंटे स्टाफ वहाँ पे मौजूद होता है। जब ये कंप्लेंट को रजिस्टर कर लिया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम मार्क कर देता है रेलिवेंट एक्सीएन को /SDO को। अगर कहीं पर ड्रेनेज का इशू था तो जब वो प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ पर जाकर एक पिक्चर ली जहाँ पर आपको ड्रेनेज इज़ बेसिकली विजिबल आउट देयर। जब उन्होंने उसको फिक्स कर दिया तो दे बेसिकली टूक अनदर पिक्चर, और वो पिक्चर भी उन्होंने फिर सिस्टम में सबमिट की, तो डैट इज़ अ प्रूफ कि वाकई रेजोल्यूशन हुई है। और जब ऑब्वियसली जब ये पिक्चर ली जाती है तो साथ हमारे पास जियो लोकेशन भी आती है। देयर इज़ अ सेपरेट मोबाइल ऐप विच इनफैक्ट पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड हैज़ पुट टुगेदर। कई सीवर ब्लॉकेज की कंप्लेन पब्लिक की तरफ से आती हैं तो हमारा अमला और हमारी जो सकर्स हैं, जेटर्स हैं, वो तो मौके पे पहुंचती हैं, उसको फौरी तौर पे रफ़ा करके लोगों को रिलीफ मुहैया किया जाता है। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मानसून कंट्रोल सेंटर, क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन, इंटरनल ऑडिट कम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ प्लानिंग एंड एवैल्यूएशन। इसके बाद जो हमारा सेकंड इशू है वो हमारा वासा के जो बिल हैं उनके बारे में है कि हम लोगों के पास जाके उनको मोटिवेट करते हैं, जो हमारे डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो हमारे रेगुलर पेज हैं, कमर्शियल हैं या डोमेस्टिक हैं। आप ये विन एंड विन सिचुएशन है कि आप अगर हमें पेमेंट देंगे हमारी सर्विसेज के अगेंस्ट तो हम आपको अच्छी सर्विसेज देंगे। We are specially focused on revenue. So we are really working hard to achieve revenue collections as per our demand, to meet with the expenditure on R&M of equipment for better service. At present, our collection efficiency is 90%. We have 700,000 connections comprising commercial and domestic connections. Revenue collection is backbone of WASA, and WASA has been able to improve its revenue collection in last 1 year tremendously. It was 24 crores per month the collection, and now it has touched 500 million per month. To achieve this goal, we are also thinking of installation of water meters for our consumers, 100% metering, so that will not only reduce the non-revenue water but also will help us to conserve the water.
Today's biggest challenge is water conservation. To bridge the gap between the people and the organization, WASA has set up a special team to overcome this challenge. पानी जो है किसी एक इदारे या फ़र्द का इशू नहीं है, बल्कि ये हम सबका एक कंबाइंड इशू है। जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, प्लास्टिक के बैग हैं, डब्बे हैं, घरों में भी, मार्केटों में भी दुकानदार वो कभी भी ओपन ड्रेन्स में ना फेंकें, क्योंकि जब वो ऐसा करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो सीवरेज का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो वज़ू का पानी है ये हज़ारों नहीं लाखों गैलन के हिसाब से ज़ाया हो जाता है। तो फिर हमने एक बात की और एक मस्जिद में वहाँ एक रेजरवेयर टैंक बनाया कि वज़ू का पानी पाइप सीधा उसके अंदर आ जाए। तो एक दिन में वो 1500 गैलन आया। हमने कहा ये तो बहुत ज़्यादा पानी है जो प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर दूसरा ये देखा कि ये जो सर्विस स्टेशन है, एक गाड़ी को अगर ये सर्विस करते हैं तो 400 लीटर ड्रिंकेबल वाटर लगता है। आज तक हमें नहीं पता 400 लीटर ड्रिंकेबल वाटर लगता है जो कि ज़मीन से निकल रहा है ड्रिंकेबल वाटर। हमने कहा भाई ये जो पानी है इस बेदर्दी से खर्च कर रहे हैं, इसको रोका जाए। उसके लिए रोकने के लिए हमने कहा कि ये रिसाइकलिंग टैंक बनाएं। हर जो सर्विस स्टेशन है अपना रिसाइकलिंग टैंक बनाएगा तो हम उसको इजाज़त देंगे, उसके अलावा वरना वो सील कर दिए जाएंगे। WASA management is committed to meet the aspirations of the people of Lahore to have an efficient civic system and a healthy life.